Hello, my dear students. I welcome you all to this lecture, introduction lecture of logical reasoning. Now, this subject might be new to you, but this very concept of logical reasoning is very basic in our everyday life. हम जो भी चीज़ करते हैं अपने लाइफ में उन हर चीज़ के पीछे होता है लॉजिक। अब सबका लॉजिक चाहे सेम हो या ना हो पर लॉजिक होता ज़रूर है। लॉजिक इज़ लाइक दैट सॉल्ट एलिमेंट इन आवर लाइफ, इन आवर फूड रादर। क्या नमक के बिना खाने का मज़ा आता है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल उसी तरह अगर अपने लाइफ में लॉजिक ना हो तो क्या लाइफ में कोई सेंस बनता है? बिल्कुल भी नहीं। इट इज़ वेरी कॉमन इन आवर कॉलेज कॉलोकियल लैंग्वेज। हम लोग कॉलेज में बोला करते हैं कि ये तो पागल है। क्यों हम किसी को पागल ऐसा एड्रेस करते हैं? क्या पागल का कोई डेफिनेशन है? नहीं। फिर हम उसे पागल क्यों कहते हैं? क्योंकि देयर इज नो लॉजिक इन द वे दैट पर्टिकुलर पर्सन बिहेव्स, थिंक्स, स्पीक्स, एक्सेट्रा. So when logic walks out of our life becomes unclear. Now let us understand what is the meaning of this word logic. अब मुझे एक चीज बताइए, जो भी अल्फाबेट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, is the spelling correct? Is it clear? Is it easily readable and understandable to your mind? Yes, this is nothing but logic. Now let me explain this to you in detail. Now just look at the screen. Okay? Now tell me, LGOIC. Is this the correct spelling of the word logic? So can you say this is correct? No. Further. Now look at the font on the screen. Is it clear? Is it easily understandable to our eyes? No. This is also not easily understandable. Now you see, the alphabets are so small that you cannot easily grasp what is written. जो लिखा है हम वो आसानी से पढ़ नहीं पाते. Right? अब अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स जो है उनका कलर और बैकग्राउंड का कलर सेम है, इसलिए जब तक अल्फ़ाबेट्स हाईलाइट नहीं होते हम पढ़ नहीं पाते कि एक्चुअली स्क्रीन पे लिखा क्या है. दिस इज नथिंग बट लॉजिक. ओके, आप स्क्रीन पे देखो, ये करेक्ट है, ये क्लियर है, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है. दिस इज नथिंग बट लॉजिक, करेक्ट and clear way of thinking. In the most simplest of the simplest languages, logic matlab kya? Correct and clear way of thinking is nothing but logic. Correct and clear way of thinking is nothing but logic. Now, logic is based on two factors. There is a premise and there is a conclusion. सी देयर इज़ अ बेस. अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं, इवेंट्स होते हैं जिन पे हमें डिसीजंस लेना पड़ता है, जिनके लिए हमें एक्शंस लेना पड़ता है, राइट? एंड इन बेसिस पे हम क्या करते हैं? हम डिसीजंस लेते हैं. सो जो डिसीजंस हम फाइनली लेते हैं उन्हें कहा जाता है कंक्लूजन. जिन घटनाओं पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है उन्हें कहा जाता है प्रेमिस. और इन दोनों का रोड मैप जो होता है उसे कहा जाता है इन्फरेंस. The entire procedure of taking decisions to a taken decision. I repeat, from taking decisions to a taken decision. This is a premise, this is a conclusion. This entire process is known as inference. It is known as inference. So logic is something like what follows from what. There is a conclusion and there is a premise. What follows? Conclusion follows from premise. कंक्लूजन हमेशा किस पे आधारित होता है? किस पे निर्भर होता है? प्रेमिस. ओके, एंड इन दोनों को नापने वाला रास्ता क्या होता है? इन्फरेंस. एंड इन सब में द एंटायर प्रोसेस शुड इन्वॉल्व व्हाट? लॉजिक. ओके, फर्दर नाउ जस्ट टेक अ क्लियर लुक एट द स्क्रीन. टेल मी, आर देयर टू monkeys or it's the same monkey? It is the same monkey divided into two parts. That means that there is logic, there is reason. They are indispensable parts of each other. They are inseparable. मतलब अगर लॉजिक है, अगर कोई लॉजिक बनता है तो उसके पीछे क्या होता है? There is a reason behind it. And if there is a reason, that reason has to be logical. So logic and reason are inseparable from each other. Now, हमें अपने लाइफ में क्या करना पड़ता है? राइट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इफ़ेक्टिव थिंकिंग करना पड़ता है. इफ़ेक्टिव थिंकिंग करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या यूज़फुल है और क्या यूज़लेस है. एंड यूज़फुलनेस एंड यूज़लेसनेस डिपेंड्स ऑन लॉजिक.
हमारे लिए क्या यूजफुल है, क्या यूजलेस है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये किस पे डिपेंड करता है? लॉजिक. सो फाइनली इट्स लॉजिक on which depends our effective thinking of our life. So logic is one of the most fundamental basis on which we have effective thinking in our life. Hello my dear students, I am Mrs. Piyusha Thakkar before you, a chartered accountant and company secretary by profession, to teach you, to train you, to take you on a journey of entirely new subject, logical reasoning, introduced in your CSEET syllabus. You. You are the future company secretary. It's you who are going to take the decisions for the company. The entire company would be dependent on your actions. You would be the linkage between the company and the shareholders. As such, as future company secretary, it is you who would determine the existence of the company. As such, each and every act of a company secretary has to be driven and has to be entirely based on logic. Has to be based on logic. Hence, our dearest ICSI has introduced this subject in your CSEET, CS Executive Entrance Test. Okay, now let us understand quickly as to what would be the broad basis of the syllabus of this entrance test. It has 4 papers. Among that, paper 2 is legal aptitude and logical reasoning. Now this paper 2 consists of 50 marks. That means legal aptitude takes away 25 marks and our subject logical reasoning is left with 25 marks. Okay, now this paper is nothing but part B of paper 2. It consists of 3 chapters: logical reasoning, verbal reasoning, and non-verbal reasoning. These 3 chapters are further divided into several subparts, which we will see in our next lectures as we move ahead with our syllabus. Further, now today let us understand the basic of this subject. What is meant by logic, what is meant by reason, and the importance of logical reasoning. Now, logic takes care of itself. All we have to do is to look and see how it does it, says Ludwig Wittgenstein. What do they say? Logic takes care of itself. All we have to do is to look and see how it does it. The best example for this is nothing but when water is poured in the ice tray. क्या होता है? जब हम अपने आइस ट्रे में पानी डालते हैं तो क्या होता है? वो पानी अपने आप आइस ट्रे का शेप ले लेता है. जब हम केक बैटर केक के मोल्ड में डालते हैं तो क्या होता है? It automatically takes the shape of the mold. Right? Right? In the same way, logic अपने आप खुद को क्या हो जाता है? एडजस्ट कर लेता है सिचुएशन के हिसाब से. ऑल वी हैव टू डू इज अंडरस्टैंड व्हाट लॉजिक इज हिडन बिहाइंड इट. अंडरस्टैंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स. सो दिस इज नथिंग बट लॉजिक. लॉजिक अपने आप ही सब कुछ सेट कर देता है, खुद को सेट कर लेता है, जो सिचुएशन है उसमें एडजस्ट हो जाता है. ओके, दिस इज नथिंग बट लॉजिक. यस, फर्दर, logical reasoning, or just logic for short, is one of the fundamental skills of effective thinking. So this is a repetition of what we have seen, that in life we have to do effective thinking and take effective decisions in our life. This depends on what? Usefulness and uselessness, and this usefulness and uselessness is dependent on logic. So thereby हमारे लाइफ में इफेक्टिव थिंकिंग कैसे होती है, करेक्ट डिसीजंस हम कैसे ले पाते हैं? बिकॉज ऑफ लॉजिक. बिकॉज ऑफ लॉजिक. यस, फर्दर, इट वर्क्स बाय रेजिंग क्वेश्चंस लाइक, इफ दिस इज ट्रू, व्हाट एल्स मस्ट बी ट्रू? और क्या सच होना ही चाहिए? प्रोबेबली ट्रू, और क्या सच हो सकता है? और क्या सच हो ही नहीं सकता? Must, probably, can't. Okay, let me explain this to you with the help of an example. The most sensational topic, okay, covered by media recently. Okay, the suicide case of Sushant Singh Rajput, SSR. Now what happened? Now there is a dilemma. Okay, there's a dilemma. Murder है कि suicide है?
Now tell me, if it holds true that it is murder, so there are three questions involved: must, probably, can't. तो अब क्या हुआ? अगर से हम कहें इसको मर्डर है, तो what is must? There should be a murderer. Correct? There should be a murderer. फिर such a high profile person. Correct? तो उसका क्या होना चाहिए? उसके पास तो बॉडी गार्ड्स रहेंगे, सेफ्टी रहेगा, राइट? देन हाउ कैन दिस मर्डर टेक प्लेस? क्या वो अकेला कर सकता है कोई इंसान मर्डरर? नहीं. सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई और भी इन्वॉल्व हो. करेक्ट? एंड इफ इट इज अ मर्डर, व्हाट कांट बी ट्रू? सुसाइड कांट बी ट्रू. दोनों में से कुछ तो एक ही हो सकता है, आइदर मर्डर या सुसाइड. इफ इट इज अ मर्डर, इट cannot be suicide. Understanding, my dear students? So, and say, अगर वो if it is a suicide, तो क्या हुआ? Can anyone else be involved? No, but there must be a reason. ऐसे ना कोई अपनी जान दे देता है, right? There has to be some reason to it, right? So there must be a reason. Okay? What probably can be there? No one must be involved. अगर कोई involved होता तो क्या उसको वैसे करने देता? No. ही इज कैपेबल खुद का खुद सुसाइड करने के लिए, राइट? सो नो वन इज इन्वॉल्व. प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. एंड इफ इट इज अ सुसाइड, कैन इट बी अ मर्डर? एब्सोल्युटली नो. दोनों में से कुछ तो एक ही हो सकता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो इट्स लॉजिक. लॉजिक टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट? फिर हमने क्या देखा कि लॉजिक स्पीक्स ऑफ थ्री क्वेश्चंस: मस्ट, प्रोबेबली एंड कांट. ओके, यस. फर्दर, इन द कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव, Doyle Allison, in his article, The Importance of Logical Thinking in the Workplace. Workplace means the place where we work. It can be office, it can be factory, it can be classroom for that matter. Stated that logical thinkers observe and analyze. वो continuously observe करते रहते हैं, देखते रहते हैं, judgment करते रहते हैं. किसको? Phenomena. Phenomena means events. Facts जो अपनी लाइफ में घटती है. Okay? Reactions. लोगों ने उसको react कैसे किया? फीडबैक. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. वो कहते हैं ना, बिल्ली ने अगर आंखें बंद कर ली तो ऐसा नहीं है कि दुनिया ने उसको देखना बंद कर दिया, उसको दुनिया दिखने बंद कर दी. दुनिया सब जानती है, अपने से बेहतर जानती है. करेक्ट? करेक्ट. सो फीडबैक forms the most important part of taking decisions, understanding, taking drawing conclusions. Yes. तो लॉजिकल थिंकर्स क्या करते हैं? किसी चीज ऑब्जर्व एंड एनालाइज करते हैं तीन चीजों को. फेनोमेना, क्या घड़ा, ओके, देन रिएक्शंस, हाउ डिड द पीपल रिएक्ट, एंड फीडबैक, लोगों का क्या कहना था. ओके, एंड देन बेस्ड ऑन दिस ड्रॉस कंक्लूजन्स. से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक हो गई, सो ये तो हो गया फेनोमेना, राइट? रिएक्शन, किसकी नौकरी गई? भाई फायर तो पहले करेगा किसी ना किसी को सीईओ, करेक्ट? सो किसकी नौकरी गई है तो रिएक्शन हुआ, पर इसके पीछे कौन था, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था, राइट? किसकी नौकरी जानी चाहिए थी और किसकी नौकरी नहीं जानी चाहिए थी, ये कौन बताएगा हमें? बाकी का स्टाफ. सो दिस इज नथिंग बट फीडबैक, एंड बेस्ड ऑन दिस व्हाट हैपेंस? कंक्लूजन्स आर ड्रॉन. ओके, यस. फर्दर, ये सब जो एंटायर प्रोसीजर है, phenomena, reactions, feedback, this entire linkage between premise and conclusion is nothing but inference. Okay, so there's a given sentence, there's a premise, there's a conclusion, and the connection is inference. Further, inferences are the basic building blocks of logical reasoning, and there are strict rules governing what counts as a valid inference and what doesn't. It's a lot like math, but applied to sentences rather than numbers. Now, in maths, okay, we have seen derivations, right? For example, a plus b square is a square plus 2ab plus b square. Now, a plus b whole square is what? Premise. A square plus b square plus 2ab is what? Conclusion. And the derivation formula is nothing but inference. Now, it is very simple in case of numbers, right? We have to make a simple calculation. But logical reasoning is applicable to words, to sentences, right? One word has several meanings in several different contexts. So, logical reasoning becomes very
tricky. Okay, logical reasoning is more about what? Applying logic to sentences, numbers, rather than numbers. Now, what is inference? Inference means what? लॉजिकल रीजनिंग में हमें क्या करना पड़ता है? से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जज ने कोई डिसीजन लिया, अगर किसी केस में जज ने कोई डिसीजन लिया, तो व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग? व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग? द बेस, द लॉजिकल रीजनिंग मीन्स व्हाट? देयर इज अ सिचुएशन, जज ने कंक्लूजन लिया, उसके बीच का रोड मैप है इन्फरेंस. सो इसमें से इन्फरेंस मतलब क्या हुआ? जज ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? ऐसा क्या हुआ कि जज को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा? राइट? ये क्यों का जवाब हमें कौन देता है? इन्फरेंस देता है. सो इन्फरेंस इज नथिंग बट द रीजन ऑफ कंक्लूजन. इन्फरेंस क्या है? रीजन ऑफ कंक्लूजन. से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोर्ट में जज ने कहा कि मिस्टर एक्स इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट ऑफ ज्वेलरी, कि मिस्टर एक्स ने ही चोरी करी है, गहना जो है वो मिस्टर एक्स ने ही चुराया है, ये तो फाइनल हो गया. तो क्या हुआ? फिर से 3 सवाल आए. मस्ट, प्रोबेबली, कांट. मस्ट, अगर मिस्टर एक्स ने चोरी करी है तो मिस्टर एक्स को पता है कि ज्वेलरी कहाँ पे है, आइदर उन्होंने कहाँ पे छुपाई है या तो कहीं पे बेच दी है. व्हाट प्रोबेबली मस्ट बी ट्रू? अब इतना बड़ा सेट है, करेक्ट, इतनी सारी ज्वेलरी है, इतना सारा उसके पास सेफ वॉल्ट है, अलार्म सिस्टम है, फिर भी कैसे चोरी हो गई? शायद कोई और इन्वॉल्व था. शायद वॉचमैन को पता था कि मालक कब आता है, मालक कब जाता है, शायद वो इन्वॉल्व हो सकता है. राइट? प्रोबेबल. शायद कोई काम वाली बाई इन्वॉल्व हो. राइट? शायद कोई उसका दोस्त इन्वॉल्व हो सेठ का, करेक्ट, जिसको सेठ के बारे में सब कुछ पता है. राइट? व्हाट कांट बी ट्रू? से जरूरी नहीं है कि मिस्टर एक्स ने चोरी की तो मिसेस एक्स ने भी चोरी की रहेगी. नॉट ट्रू. अंडरस्टैंडिंग. सो ओके, सो देयर इज व्हाट? देयर इज अ मस्ट, there is a probability and something that is not true. Okay, yes, further, so this is inference. पता करो कि जज ने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, उसके बेस तक जाओ, उसके अंत तक जाओ, ऐसा क्यों हुआ पता लगा के ही सांस लो. That is nothing but inference. So inference means using clues to figure something out that's not stated in the text. Okay, so reading between the lines. क्या दिख रहा है? वो बोलते हैं ना, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग. राइट? ओके, सो अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द हिडन इंटेंशन, उसके पीछे क्या छुपा है, इज इन्फ्लुएंस. आगे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ फ्यू एग्जांपल्स. इफ देयर इज समवन एट द डोर, अगर हमारे घर पे कोई आया और एंड इफ यू हैव अ पेट डॉग, व्हाट हैपेंस? द डॉग स्टार्ट्स बार्किंग. राइट? कुत्ता भौंकने लग जाता है. अब क्या कुत्ता कोई दरवाजे पे आता है तभी भौंकता है? नहीं, कई बार दूसरे कुत्तों को देख के भौंकता है, कई बार बिल्लियों को देख के भौंकता है. राइट? सो अगर कुत्ता भौंक रहा है तो व्हाट मस्ट बी ट्रू? दैट इफ इट इज नॉट बार्किंग, देयर इज नो वन एट द डोर. करेक्ट? अगर वो कुत्ता भौंक नहीं रहा, इफ द डॉग इज नॉट बार्किंग, दैट मीन्स देयर इज नो वन एट द डोर. Right? दूसरा, just because a dog barks doesn't mean that there is someone at the door. It can be some other dog, it can be a cat also. There are a few sentences that are probably true. Right? The dog can sense, hear or smell when someone is at the door. The dog belongs to the people who live in the house where the door is located. सीधी बात है, सीधी बात है. अगर मेरे घर पे कुत्ता है at the entrance, that means it's my pet dog. कोई स्ट्रीट डॉग को उठा के अपने घर में लाता है क्या? नहीं लाता. ओके, सो दिस इज अंडरस्टूड. ये कुछ चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती. सेकंड, वेरी इंटरेस्टिंग. A sales representative modifies a presentation about a product to highlight its user-friendly qualities after receiving feedback from customers, indicating that ease of use was the primary reason that they had purchased the product. See, एक बार क्या हुआ, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन से प्रोडक्ट का? से मैगी का था. ओके, मैगी का था. अब क्या हुआ? ही वॉन्टेड टू सेल द प्रोडक्ट. तो उसने बोल दिया कि मैगी है, बेचो मैगी, यू हैव टू बाय इट, इट्स चीपर, ये वो, ऐसा शॉर्ट सा प्रेजेंटेशन लिया. और जैसे कि प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो उसने क्या किया? फीडबैक फॉर्म दिया. हम कई बार कॉफ़ी शॉप्स में जाते हैं तो भी हमारे नंबर, नाम और फिर उसके आगे फीडबैक लिखवाया जाता है. इन द सेम वे उसने फीडबैक फॉर्म भर के लिया. अब उसने जब फीडबैक फॉर्म भर के लिया तो क्या हुआ? देन व्हाट हैपेंड? किसी ने उसको फीडबैक दिया
कि जनाब आपने इस पे फोकस किया ही नहीं जो एडवांटेजेस है मैगी के। जैसे मैगी होती बड़ी टेस्टी है, राइट, 2 मिनट में झटपट बन जाती है, राइट, देन नाइट आउट में फ्रेंड्स की याद दिलाती है, देन कजन्स को ननिहाल की याद दिलाती है। इन सब चीज़ों को तो आपने कवर ही नहीं किया। अरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने सोचा ये तो बात सही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर अगले प्रेजेंटेशन में उसने क्या किया, सिर्फ पॉजिटिव बातें बोली मैगी के बारे में, सिर्फ उसके बेनिफिट्स पे बेनिफिट्स बोलता गया, एंड पीपल वर रियली इम्प्रेस्ड, एंड that led to increase in the turnover of Maggie. Now do you understand the importance of feedback, reactions and everything, right? Yes. Further, let's go ahead. So logical reasoning is the subject that we are actually dealing with. So logic means what? Correct and clear thinking. Okay, reasoning. What is reasoning? Tell me, what is reasoning? ऐसा क्यों हुआ? Process of thinking is nothing but reasoning. So in a way, what is logical reasoning? Systematic steps. Why systematic steps? There is a phenomena, there are reactions, there are feedback. वो इकट्ठा करो, फिर उस पे conclusion draw करो. Correct? So systematic steps to what? To arrive at a sensible solution. To arrive at a sensible solution is nothing but logical reasoning. Yes, logic is universal part of human experience. Why universal part? लॉजिक हर जगह प्रेजेंट है, हर किसी चीज में प्रेजेंट है। हम लाइफ में कोई भी चीज नहीं कर सकते विदाउट लॉजिक। Okay, yes, even agriculture would be impossible without inductive reasoning about weather and sunlight. Yes, this picture reminds you of which movie? Yes, my dear students, does it remind you of Lagan? This is which scene of the movie? Okay, there are grey clouds coming in the sky. Okay, and people are super excited. Okay, now इस बार बरसात आएगी, okay, वर्षा होगी और फिर फसल बढ़िया से आएगी, फसल आएगी, हम उसे बेचेंगे और हम क्या करेंगे, हम अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, हम लगान भी दे देंगे और हम पैसा कुछ इकट्ठा भी कर पाएंगे, हम अच्छे से जिंदगी बिता पाएंगे, right? So with all this hope they are waiting. So it's weather indicate करती है कि आपका एग्रीकल्चर, आपका फार्मिंग, आपका जो फसल जो आएगी वो ठीक से आएगी कि नहीं। सनलाइट हुआ तो प्लांट्स अंडरगो व्हाट? फोटोसिंथेसिस, जनरेट फूड, करेक्ट? सो इट इज वेदर, इट इज सनलाइट, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर। ओके, इन द सेम वे कई स्ट्रक्चर्स भी लॉजिक पे डिपेंड है। द अदर डे आई वाज सीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। तब मैंने देखा कि ये इतनी लंबी बिल्डिंग, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, ओके, इट इज बेस्ड ऑन अ 3-legged स्ट्रक्चर। पूरा उस बिल्डिंग का जो वजन है, जो भार है, वो किस पे है? इट्स ऑन दैट 3-legged स्ट्रक्चर। वो पूरा दैट इज, इट इज कंट्रोलिंग द एंटायर बिल्डिंग, टेकिंग केयर ऑफ इट, राइट? सो जब आर्किटेक्ट्स ये बिल्डिंग बना रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? लॉजिक अप्लाई किया, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग ना हो तो हम कभी भी इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं? नहीं। आए दिन हमें न्यूज़ मिलती है, ये बिल्डिंग गिर गई, वो बिल्डिंग गिर गई, स्पेशली इन द मुंबई एरियाज। रिसेंटली देयर आर सो मेनी न्यूज़, करेक्ट? सो पीपल डाई अंडर द डेब्रीज। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, राइट? यस। सो इट्स अ 3-legged स्ट्रक्चर, द बेस, जिसके ऊपर आर्किटेक्ट्स ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। तो आर्किटेक्ट्स अप्लाइड द लॉजिक, देखा कि ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं जो इस पूरे बिल्डिंग को पकड़ के रहेगा। ओके, इतना ही नहीं, द बिल्डिंग इज सो टॉल एंड ऊपर के लेवल्स पे इतना विंड प्रेशर है कि अगर कोई बालकनी में इंसान आ जाए तो उड़ जाए। तो इन्होंने क्या किया? अपना लॉजिक लगाया। कई कट्स इस प्रकार से दिए हैं बिल्डिंग में ताकि विंड प्रेशर को अपने आप कंट्रोल कर सके। Understanding? So logic is prevalent everywhere: agriculture, construction, everyday life, common sense, daily behavior, अपनी पढ़ाई, अपनी success, okay? अपना behavior, हर चीज में क्या involved है? Logic. Logic from the Greek logos. Okay, so what is the origination?
लॉजिक ये वर्ड कहाँ से आया है? इट्स अ ग्रीक वर्ड. व्हाट्स द बेसिक वर्ड? लोगोस, विच हैज अ वैरायटी ऑफ मीनिंग इंक्लूडिंग वर्ड, thought, idea, argument, account, reason, principle. Logic can be anything. Logic can be anything. It's the study of reasoning or the study of the principles and criteria of valid inference and demonstration. Okay? अगर अपना inference अच्छा रहा, good reasoning will lead to good conclusion and bad reasoning will lead to bad conclusion. Yes, further. Formalized logic had appeared in several places with more or less similar results. The Greek philosopher Aristotle is credited with being the first to develop a formal system of logical reasoning, but there were already people in India and China working on formal logic long before Aristotle was born. Ab Aristotle came up with this formal entire subject of logical reasoning, entire topic of logical reasoning. तो क्या इसके पहले लॉजिक नहीं था? था, लॉजिक था, बट उसके होने का एहसास नहीं था, राइट? उसके होने का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, वो बस था, राइट? उसको पूरा प्रॉपर फॉर्मलाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में लोगों को उसके बारे में किसने बताया? एरिस्टोटल ने बताया अबाउट लॉजिकल रीजनिंग. यस, फर्दर ना, अब हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा लॉजिक के बारे में, अब हम देखेंगे रीजनिंग के बारे में. ओके, रीजनिंग मीन्स व्हाट? बेस, रीजन, व्हाई. नाउ देयर आर वेरियस डेफिनेशंस given for reasoning. The first is the first definition comes by Merriam-Webster dictionary. It says reasoning means the use of reason. Why? जब हम किसी सिचुएशन को why करके क्वेश्चन करते हैं, the answer to this question why is nothing but reason. Okay, so this definition is given by Merriam-Webster dictionary. आगे रेशमा एस बोलते हैं that reasoning to be logical should be what? Controlled thinking and reference to reality. For example, what is this controlled thinking? What is this controlled thinking? Say for example, अगर हमने पाइप मैन्युफैक्चर किया तो क्या करना पड़ता है? उसको ऑन साइट इंस्टॉल करने से पहले उसका टेस्टिंग करना पड़ता है, करेक्ट? तो उसको क्या करना पड़ता है? उस पर्टिकुलर पाइप को अगर डेजर्ट एरिया में मुझे यूज़ करना है, किसी हॉट वेदर एरिया में यूज़ करना है, तो पहले उसको क्या करना पड़ता है? उसको टेस्ट करना पड़ता है कि दैट पर्टिकुलर पाइप वुड इट सस्टेन दैट हाई टेम्परेचर. दिन में बहुत हाई टेम्परेचर होता है और रात में बहुत लो टेम्परेचर होता है, कि विल इट बी एबल टू सस्टेन इन दैट लो टेम्परेचर ऑल्सो, राइट? सो दैट इज कंट्रोल्ड थिंकिंग. सो ऐसे कंट्रोल्ड थिंकिंग वाली सिचुएशंस में हमको रीजनिंग करना पड़ता है. हमें डू नॉट लूज द फोकस. हमें कहाँ पे फोकस करना है? उधर ही, राइट? केस चल रहा है कि ये मर्डर है या सुसाइड है और लोग पीछे पड़ रहे हैं ड्रग प्रोब केस के. Doesn't make sense. पहले sort the right questions first. Understanding? So this is controlled thinking. So first thing that is needed is controlled thinking and reference to reality. Very, very, very important. Okay? सपनों की दुनिया doesn't work in practical life. Okay? Yes. So what is reasoning as per Reshma S? Controlled thinking and reference to reality. Now, let us see what Sherman says. So Sherman says that if there is a problem, the solution to that problem is nothing but reasoning. अगर आपकी आंखें खराब है, ये क्या है? प्रॉब्लम है. इसका सोल्यूशन क्या है? चश्मा लगा लो, राइट? सो दिस सोल्यूशन इज नथिंग बट रीजनिंग. ओके, यस. फर्दर ऐसे कई सारे डेफिनेशंस रीजनिंग के दिए गए हैं. ओके, यस. आगे लेट्स सी. Now we have seen what? Logic. Now we know what is reasoning. Now let's see what are types of logical reasoning. Okay, first is deductive reasoning and second is inductive reasoning. Now deductive reasoning मतलब सत्यवचन. मतलब क्या? सत्यवचन. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें हमेशा लाइफ में सच बोलना चाहिए, right? Such universal facts, such universal sentences are nothing but deductive reasoning. Facts. ओके, फैक्ट्स. और जो बोलते हैं ना वेल एक्सेप्टेड नॉर्म्स आर नथिंग बट डिडक्टिव रीजनिंग. अब इंडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या? से इन अ बैच ऑफ माय स्टूडेंट, से स्टूडेंट नंबर 1 इज स्मार्ट,
Student number 10 is smart. Student number 50, smart. Student number 100, smart. Student number 150, smart. Because ये सारे smart है, I conclude that my entire CSEET batch is smart. Okay? That is inductive reasoning. इन करो सबको, वन बाय वन, पर्टिकुलर केसेस को इन करो, उनका कंक्लूजन एक साथ करो, और दैट कंक्लूजन बिकम्स द वाइड हेल्ड कंक्लूजन. दैट इज नथिंग बट इंडक्टिव रीजनिंग. इट इज नथिंग बट इंडक्टिव reasoning. So this was all about the subject of logical reasoning, a bit of a theory part of logical reasoning. Now this chapter, this part B, paper 2, is divided into 3 chapters: logical, verbal and non-verbal reasoning. Now these are the various topics in our syllabus. Okay, these topics will be held in detail in the further lectures as we move ahead. Till then, take care and thank you so much. Okay, yes, let's come back and let's go on this beautiful, interesting journey of logical reasoning. Okay, so come back tomorrow, same time, with all your senses and online with me. Okay, so come on, my dear students, wish you a goodbye and thank you so much. See you all in the next lecture. Yes.